Hello everyone, welcome to Legal Vidya, and in this video we'll be discussing the case of KC Cinema versus State of Jammu and Kashmir. तो ये केस जो है it is the case of Supreme Court of India जहाँ पे Supreme Court discusses on the right of cinema owners and also compares it with the right of moviegoers. So let's look into the background of the case. So the case starts जब दो advocates एक public interest litigation that is एक PIL फाइल करते हैं in the High Court of Jammu and Kashmir regarding the prohibition of bringing outside food into cinema halls in Jammu and Kashmir का theaters. So litigants तो थे that is the दो advocates थे वो ये argue कर रहे थे कि जो cinema owners है they're preventing movie goers from bringing their own food जिसके कारण जो movie goers है they have to purchase expensive and unhealthy food within the cinema premises. तो ये पिटीशन जब हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला कि जो रूल्स है दैट इज़ द जम्मू कश्मीर सिनेमा रेगुलेशन रूल्स 1975 वो किसी भी मूवी गोर को रोकते नहीं हैं फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन फूड एंड वाटर इनटू सिनेमा हॉल्स. Court held that the prohibition imposed by cinema owners violated the right to choose food, including the right to not consume junk food and the right to good health under Article 21 of the Indian Constitution. फिर हाई कोर्ट ने क्या किया दैट इज़ हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स और या फिर बोल सकते डायरेक्शंस इशू किए जिसमें उन्होंने ये बोला था कि सिनेमा ओनर शुड नॉट प्रोहिबिट मूवी गोअर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन फूड एंड वाटर इनटू थिएटर. तो इस केस में जो अपीलेंस है दैट इज़ द सिनेमा गोअर्स. Hello everyone, welcome to Legal Vidya, and in this video we'll be discussing the case of KC Cinema versus State of Jammu and Kashmir. So this case relates to right of cinema owners, that is the movie theater owners. So let's look at the background of this case. ये केस तब चालू होता है जब दो एडवोकेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उन्होंने जो ये PIL फाइल की थी दैट वाज रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड फूड इनटू सिनेमा हॉल्स. तो वो जो दो एडवोकेट्स थे दैट इज़ द लिटिगेंट्स उनका ये कहना था कि जो सिनेमा ओनर्स है प्रिवेंटिंग मूवी गोअर्स दैट इज़ जो मूवी देखने जाते हैं फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन फूड जिसके कारण जो मूवी देखने जाते हैं उन लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर एक्सपेंसिव और अनहेल्दी खाना खरीदना पड़ रहा है. तो हाई कोर्ट ने जब इस केस का दैट इज़ जिस PIL का जजमेंट दिया उसने ये बोला कि जो रूल्स है रिगार्डिंग सिनेमा रेगुलेशंस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो प्रोहिबिट नहीं करते मूवी गोअर्स को फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन फूड एंड वाटर इनटू सिनेमा हॉल्स. कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो प्रोहिबिशन सिनेमा ओनर्स लगा रहे हैं दैट इज़ ये जो सिनेमा ओनर्स बोल रहे हैं कि आप अपना खाना मत लाओ बाय डूइंग दिस दे आर वायलेटिंग द राइट टू चूज फूड इंक्लूडिंग द राइट टू नॉट कंज्यूम जंक फूड and the right to good health under Article 21 of the Constitution. फिर हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए जिसमें उन्होंने ये बोला कि सिनेमा ओनर्स मूवी गोअर्स को अपना खाना लाने से नहीं रोकेंगे. तो इससे एग्री होके अपीलेंस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ द सिनेमा ओनर्स. उन्होंने बोला कि सिनेमा हॉल इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर मूवी गोअर्स टू परचेज the food within the premises. They also claim that there are provision for drinking water within the cinema halls, which is free of cost. तो आप वो कंज्यूम कर सकते हो. और जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे उन्होंने ये बोला कि सिनेमा टिकट्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट नहीं किया गया फॉर मूवी गोअर्स टू नॉट ब्रिंग देयर फूड देन इट शुड बी अलाउड. सो ये केस जो है प्राइमरीली इन्वॉल्व करता है द फॉलोइंग इशूज़ दैट इज़ द राइट ऑफ सिनेमा ओनर्स टू रेगुलेट their premises, the right of moviegoers to choose and access reasonably priced and healthy food options, and the interpretation of existing rules that is the Jammu and Kashmir Cinema Regulation Rule 1975. So इस केस में जो respondents थे that is the state of Jammu and Kashmir and the other litigants who were there उन्होंने 4 जजमेंट साइड किए थे. ना ये जो 4 जजमेंट थे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं एंड इट द मेन क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन इज वेदर one party will be liable to other in terms when there is a contract. तो जो 4 केसेस है द फर्स्ट इज पार्कर वर्सेस द साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी
Then there's Ollie versus Marlboro Court Limited. Then there's McCutcheon versus David McBrain Limited. And there's Thornton versus Shoe Lane Parking Limited. तो जो पार्कर के केसेस में बेसिकली ये हुआ था कि प्लेंटिफ ने अपने सामान जो है एक रेलवे के क्लॉक रूम में रखा था. नाउ एट द टाइम ही डिपॉजिटेड देम उसे एक टिकट मिला था जिसमें वर्ड्स लिखे हुए थे सी बैक. अब reverse side of the ticket contained the term stating the company will not be responsible for any package exceeding the value of 10 lakhs. और इसी से रिलेटेड एक प्लग कार्ड भी हैंग किया गया था वॉल पे विच वॉज विजिबल टू ऑल. Now what happened was plaintiff's belongings were lost and he filed a suit and wanted the defendants to be held liable. Now the question was whether the defendants will be liable. First, the case was Ollie versus Marlborough Court Limited, जिसमें Ollie जो थी she was a paying guest in the defendant's hotel. Now after paying for the room, she received her keys and went to her room. There, a notice containing numerous terms and conditions were displayed. One such condition was that कि जो proprietors of the hotel will not hold themselves responsible for any articles lost until and unless while the person is leaving the hotel they're handed the keys for safe custody. Similarly, मैककिचन का केस था. सेम इशू था कि प्लेंटिफ ने एक शिपिंग कंपनी को सू कर दिया for the loss of his car during transit. The court examined whether the company should disclaim liability based on terms and conditions usually presented to the customers. और जो थ्रॉन्टन के केस था, again the issue was that the plaintiff got injured in an automatic car park and raised questions about the liability of parking company based on conditions displayed outside and on the ticket. Now, all these four concerns the issue whether liability can be fixed on one of the parties based on terms and conditions of the contract that is in question. Each of the decision addresses whether the contract was entered into and what are the terms of contract. लेकिन इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है दे सेड कि ये जो जजमेंट साइड किए हैं रिस्पोंडेंट्स ने they do not impact the present legal consideration significantly. Now let's look at the Supreme Court opinion of High Court. अब High Court ने कुछ बातें बोली थी अपने जजमेंट में and Supreme Court had some opinions regarding it. Now what were they? The first one was that under Article 19, Clause 1, Subclause J, that is giving a person the freedom of trade and profession and the right to practice any trade and profession until and unless he does anything that is contrary to public policy. Now, Article 19, Clause 1, Clause C recognizes citizens' right to practice any profession, trade, or business subject to reasonable restrictions that are mentioned under Article 19, Clause 2. Now, it said that the trade of operating cinema theaters is regulated by a state. और इस केस में जो रूल्स थे they were the rules of 1975 जिसे फ्रेम किया था स्टेट गवर्नमेंट ने दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जो 1975 के रूल्स थे वो कहीं ये नहीं बोलते थे that cinema owners will allow moviegoers to bring their own food and beverages. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए ये बोला कि in issuing directions contrary to the absence of such rules, the High Court has transgraded its jurisdiction given to it under Article 226. फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सिनेमा हॉल है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो ओनर है वो उसे किसी भी तौर पे चला सकता है. He can stipulate his own terms regarding his private property provided that they are not against public safety, welfare or interest. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हाई कोर्ट है उसने जब प्रोहिबिट किया सिनेमा ओनर्स को फ्रॉम डिसअलाउइंग आउटसाइड फूड इट अफेक्टेड द लेजिटिमेट राइट ऑफ थिएटर ओनर्स. एंड उसने ये भी बोला कि जो मूवी हॉल्स है दर नॉट जस्ट स्क्रीनिंग वेन्यूज, ये एक पूरा पैकेज है. आप सिर्फ मूवी देखने नहीं जाते हो वहाँ पे, आप जो है एक एंटरटेनमेंट लेने जाते हो, एक ऐसे एक एक्सपीरियंस लेने जाते हो जब आप मूवी देखने जाते हो. इट इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट इंक्लूड सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस. तो अगर आप ये सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस हटा दोगे देन द मूवी विल नॉट जनरेट एनफ इकोनॉमिक वैल्यू. नाउ फर्दर द कोर्ट ऑल्सो सेड कि prohibition on carrying outside food is a condition to stimulate food and beverage sales, contributing to business economic viability.
देन सुप्रीम कोर्ट गेव सर्टन एग्जाम्पल्स कि जो म्यूजियम्स होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, उसमें भी ऐसे सिमिलर कंडीशंस होती है. Then the appellants assured arrangement for free hygienic drinking water within cinema halls. And further, they also said कि they're open to considering request on case by case basis. Now, if there is an infant, तो उसे हर 2-4 घंटे में दूध पिलाना पड़ेगा. If there is someone who's diabetic or who has some dietary restrictions या फिर उसे कुछ एलर्जीज है तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खा सकता, सो वो केस बाय केस बेसिस पे डिफर करेगा एंड उन्हें सिनेमा ओनर्स अलाउ करेंगे. बट अलाउइंग एवरी वन टू ब्रिंग देयर आउटसाइड फूड इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन क्योंकि उनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा. अब डिसीजन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी उसको अलाउ किया और फिर पार्टिंग रिमार्क्स में ये बोला कि जो रूल 7 है ऑफ द 1975 रूल्स, इट मैंडेट्स द यूनिफॉर्म सेल प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट्स इन ऑल लाइसेंस सिनेमास इन द स्टेट. ये 87 का सबसेक्शन 1 बात करता है. Then the second part states that the rates must be charged for a picture screened for the second time in the auditorium. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the High Court in its judgment directed the government and licensing authorities to ensure uniformity in ticket prices as per Rule 87 subsection 1 sub Rule 2. ठीक है, यह बात तो सही थी. Then the court said कि the High Court's direction on Rule 87 is affirmed but not seen as imposing any additional requirements beyond the existing rule. दैट इज़ जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लगाई कि सिनेमा ओनर्स अलाउ कर देंगे मूवी गोवर्स को टू ब्रिंग देयर ओन फूड, दैट इज़ समथिंग दैट विल नॉट बी अलाउड. एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट सेड कि सिनेमा जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है एक सिनेमा ओनर की एंड दे कैन डिसाइड ऑन द टर्म्स ऑफ हाउ दे रन देयर बिजनेस क्योंकि वो भी एक बिजनेस चला रहे हैं सो एज टू एंश्योर दैट दे गेन सम इकोनॉमिक वैल्यू आउट ऑफ इट. So that was the case of KC Cinema versus the state of Jammu and Kashmir. Thank you everyone for watching this video.